तो दोस्तों लाइव आ चुके हैं, फटाफट से लाइव आ जाओ, देखते हैं कौन पहले आता है, कौन पहले कमेंट करता है। शो कमेंट कैसे करें, यहाँ शो होता है ना, मैसेज चैट फोटो मैसेज मॉडरेशन और मैसेज, ठीक है चलो। लंदन लंदन देख लें क्या चीज़ है। अरे यार ये देखते हैं, गैंगनम स्ट्रीट इन दुबई। फेस्टिव सीजन इन गाइस, पूरे दिन तेल में पकौड़े फ्राई होने की स्मेल, बालकनी से नॉनस्टॉप पटाखों की स्मेल। ये फेस्टिव सीजन फेस्टिव कैसे स्मेल करेगा? डोंट वरी, नया गोदरेज है फेस्टिव मैजिक। वाओ, फेस्टिव स्मेल। हर 10 मिनट में नॉनस्टॉप खुशबू फैलाए घर को महकाए, गोदरेज है फेस्टिव मैजिक। हेलो अशोक जी, आओ बैठो जी। रुके बेजान नहीं आता है। और चलना ओ भाई साहब, बिजली पानी पानी हो गई स्ट्रीट पूरी। शोर ट्रैवलर मेरा बाइक गिर गया। कहाँ कहाँ तक जाने हैं। जल्दी से फटाफट मैसेज कर दो यार। चलो ये मोटे क्या कर रहा है।
Light has gone in the city. PS5 कैमरा लेने चलेंगे। Remember the PS5 HD camera? Right after it launched, it was heavily discounted to half price. That's because Sony promised 1080p streaming, but the quality was very poor. It only worked with the PS5's built-in streaming software, no plug-and-play for PC, and no support for other streaming apps. Gamers quickly realized they were better off with a cheap Logitech camera if they wanted real streaming. ये क्या भाई नेगेटिव कर दिया था माहौल माहौल ही नेगेटिव कर दिया है हेलो गाइस, मैंने उठाया अपने लिए स्ट्रीमिंग कैमरा जो कि सोनी की तरफ से आता है और ये 1080p तक वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता है। चलिए गाइस, इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मिलता है हमें एक बॉक्स और उसके अंदर हमारा स्ट्रीमिंग कैमरा और एक ज्ञान देने के लिए मैनुअल। क्या बकवास कर रहे हैं और इसके साथ हमको वायर भी काफी लंबी मिलती है एंड साइड में मिलता है PS5 का प्यारा सा लोगो जो इसके लुक को और ज्यादा इनहैंस कर देता है। एंड गाइस, तुम लोग इस कैमरे को टेबल पे भी रख सकते हो और अपने मॉनिटर के ऊपर भी लगा सकते हो और इसको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। कैमरे के ब्लू वाले प्लग को ब्लू वाले पोर्ट में लगा देना है, बस ये कनेक्ट हो गया। सो गाइस, अब हमने अपना PS5 कर लिया ऑन और हमारा कैमरा हो गया प्लेस। मैं आपको बताता हूं उसको सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग पर, उसके बाद जाएंगे एक्सेसरीज में, देन अदर एक्सेसरीज एंड लास्ट में जाएंगे एडजस्ट एचडी कैमरा में और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना, बस आपका काम हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू। मैं भी लगता है मेरे को ऐसा ही करना ही पड़ेगा। शुड यू बाइट पहले देखा है ना बाइट करने के लिए 5000 का कैमरा है यार, बड़ी मोटी गाल थोड़ी है, थोड़ी छोटी गाल थोड़ी है। crafted with finesse. Time, jab mile, jitna mile, make the most of it. Nescafe, make your world. If you stream from your PS5 and you want to start using a webcam, the Sony PlayStation 5 webcam is the only webcam you can use, especially if you're streaming directly from your console. Other webcams will not work. So before you buy this webcam, let me go ahead and tell you all about it. Let's go ahead and dive in. Let's go dive in. Take a look at this webcam. So the webcam plugs into the back of the PlayStation 5 and it automatically picks it up. So you don't need to install anything. It has a pretty nice build quality similar to the PlayStation 5 and you get 1080p quality, which is pretty impressive. And then it does have an adjustable stand to mount it on your monitor or your TV. You only get a small range of motion with it, but it gets the job done. So let's go ahead and jump into the PS5 and see how this webcam looks. So on your PlayStation 5, you can come to settings and then you want to scroll mask. This is what I thought was pretty cool. So you have the ability to be able to remove your background without an actual green screen. It's not the best, but let me show you what that looks like. It's called auto key. So you can select auto key and you'll see it'll do its best to remove my background. It's not the worst, but it's also not nowhere near close to being the best. And then you can kind of adjust it here to make it as good as possible as you can. But for the most part, auto key is not the greatest. You also have the ability to do a text cutout, which allows you to be able to also crop out some of the background. You can do a square cutout. You can do a circle cutout. So again, you can adjust the camera and be in a position where it's like, okay, cool, my background's not taken out. So I love the fact that you're able to kind of adjust that. Now, when you do have a green screen, it does do a pretty good job with good lighting. So let me show you what that looks like now. So once you have a green screen behind you, if you come back to where it says clipping mask,
when you scroll down to chroma key, you're going to see here that if you adjust the level, you're going to see here that I did a pretty good job of removing the background. So now I don't have to worry about what's seen behind me. So the green screen does do a good job, even if you don't have the green screen properly lit. And again, you want to make sure your green screen is lit as much as possible for you to be able to get the most out of it. So that is what it's going to look like with the actual green screen. Then, of course, you have the ability to change your brightness, your contrast, your transparency to be able to go ahead and utilize this. Now, there is a thing that I don't like about this camera, and I'm going to show you here in just a few moments. So you can do picture-in-picture, meaning that you can have your webcam and your gameplay show up on stream. So the only issue that I have with the picture-in-picture is that when you are streaming with it, you are not able to remove the camera from showing up on your monitor. Let me show you what it means. So you want to load up a game to be able to begin streaming on the console, since it doesn't let you stream from the dashboard. And then once you have a game up, you want to go ahead and press the create button, and then you want to come to the side where it says broadcast. We'll then go ahead and select broadcast options. Then we want to make sure you select display camera. And then we want to simply select go live. Now it's going to go ahead and ask you where do you want to place your camera. And once you do this, you have to keep it there. So let's say I want to adjust it here in this position here. Once I'm here now, you're not going to be able to change this. Now, like I said, it's up on my monitor. So typically you would want this to just be on your stream so your stream can see you, but it's on my monitor right now. So it is blocking all the additional stuff that you see, additional content, theme of the day, everything that's behind me, I can't personally see either. And that's the only thing that I don't like about this. But like I said, it's pretty decent quality with the right lighting. Now, a few things you want to know about this webcam is that it's not going to work with your PS4. It does not work with VR. And you're only able to utilize it to stream to both Twitch and YouTube, which is directly inside of the console. So you can't use it on your computer. Now, there are some things I wish the PlayStation would change to make this webcam better, such as the price, but the ability to remove the background, as you saw, is pretty decent. The ability to be able to record and stream with the webcam is clutch, and the quality is not that bad. Now, again, until PlayStation allows us to use a different webcam, it's going to be the best that we have at the moment, unless you start streaming with a capture card and a PC. Now, if streaming is not for you and you want to be able to record your gaming content directly on your PS5, go ahead and watch this video right here where I don't want to record it. तीन साल पहले आया था नो अपग्रेड. What the heck? Sony PS5 latest camera. अरे ठीक है कहाँ ऐड कर रहा है? Sony has finally stopped lying about the PlayStation 5. This logo is probably on the box of your PS5, which claims it can support up to 8K gaming. As we all know, it struggles to even play games at 4K 120. But recently, Sony made a change and have removed this logo from all of the new batches of the PlayStation 5 consoles. I knew it. I bought the new PSVR 2 headset for the PS5, and it's not what I expected. The specs on this thing are insane. 4K HDR OLED 120Hz displays, eye tracking, and all of this is powered by a 1 USB Type-C cable. However, the build quality is atrocious. Just look at the padding for your face. It looks like it's missing a cover. And very disappointing first impressions, considering this costs $550. Follow for my full review. Dolby Vision 60. और इतना वाइजा तूने रिमोट पे लगा दिया है नुबड़े कहीं के और 50 तो रिमोट लेके बैठा था अरे भाई इतना पुराना Hi है there, welcome to my channel. I have the PlayStation 5 HD camera here for everyone to see today, and right समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये 40,000 रुपए सबसे पहले भाई भैया मुझे 40,000 में PS5 चाहिए मिल जाएगा ये बताओ पहले
भैया पैक कर दो 2 महीने की वारंटी के साथ भैया मैं लेके जा रहा हूँ ठीक है पैसे भरो अपने ओके यार क्यों नहीं रहते यार यहाँ पे इनकी चूसरी 12 दिन पहले तो हेलो गाइस, डाली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैंने लाया हूँ मैंने क्या होता बे द कैमरा, जिसकी तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैंने क्या होता है तो खोलेंगे इसे खोलिए। तो ये मिलता है हमको एचडी कैमरा एंड PS5 का है, जिस पे आप एचडी अबे हटना और ये है जो मेन चीज, सबकी शान, मान, दान, प्रदान। अब इसे कनेक्ट करना पड़ेगा वायर को। चलना है यार चिपेड़ाना हारे में तो कैप्चर एंड ब्रॉडकास्ट में कैप्चर एंड ब्रॉडकास्ट। कट आउट हेक्सा कट और ये अपना क्रोमा और ये ऑटो की, इसके अंदर आप अपना वो भी कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन के लिए, उसके लिए। और इसमें अपना ट्रांसपेरेंसी, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस, वो सारी सेटिंग्स है। इसमें इफेक्ट्स भी आ जाएंगे आपको, कॉमिक, पिक्सेलेट, स्कैन लाइंस, टॉय कैमरा, मोनोक्रोम। और कैप्चर में तो बस मुझे इतना ही है, सेटिंग जो भी है इसकी वीडियो क्लिप फॉर्मेट, ये तो डायरेक्ट यूज पर ये करना पड़ेगा। और वन मोर थिंग कि आपको ये कैमरा लेने के बाद में जब अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग अगर करना है तो जब आप गेम प्ले करोगे तो आपको ये वाला की दबाना है गेम प्ले करने के बाद में। लेट्स से हम आपको दिखा देते हैं एक बार कैसे रिकॉर्ड करना है। ये लाइक अपने कोई गेम आपने ओपन किया है, इसमें जैसे आप गेम प्ले करोगे, जैसे ही गेम स्टार्ट होगा वैसे ही आपको एक बार यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे इस साइड में ब्रॉडकास्ट में, लाइक ये वाला आइकॉन आएगा, यहाँ पर आपको एक्स क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डायरेक्टली अपना गो लाइव करना है। गो लाइव करने के बाद में आपको जो भी रखना है, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट, जो भी आपको सेटिंग रखना है रख सकते हो। और यहाँ पर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये अपना टैग्स के लिए है, तो आपको जो भी रखना है वो डायरेक्टली आप जैसे ही गो लाइव करोगे वैसे ही वो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्टली लाइव जाएगा उस पर यूट्यूब पर। यार चूतिया बना रहे हैं। हमारा वीडियो इतना ही था आज का, ये अनबॉक्सिंग। अबे चलना है यार तो भी। In this video, I'm going to walk you through how to get the best performance out of PS5. My tight morning schedule has no time for against-step skincare routine. That's गेम कौन सी ले यार? पूरे दिन से खुशबू आ कहां से रही है? लाइव चल रहा How your है। body absorbs your supplements makes a big difference. So when supplements are rushed through your system, you lose, but deliver it slowly and it all gets absorbed. Our capsules have a slow release technology. It delivers nutrients slowly Zero for bandage, testing zero, over zero, hours, zero, well-being zero. nutrition slow release supplements. In this video, I'm going to walk you through how to get the best performance out of your PS5 and actually make it run like a beast. I'll show you how to reduce input lag, get better graphics, smoother response times and FPS, and an overall better gaming experience. A lot of players have been searching for ways to squeeze the most out of their console, so today I'll share a few simple tweaks that really make a difference. Hopefully you'll find at least a few of these tips useful. As always, don't forget to drop a like and let's get started.
So the first and probably the biggest improvement you can make comes down to your display. Having a modern TV or monitor that supports HDMI 2.1 and features like VRR or 120Hz refresh rates is a game changer. The standard cable that comes with the PS5 works perfectly fine for this, but if you're using a different cable, just make sure it's HDMI 2.1 at least. Next, head into your PS5 settings. Under Game Default Presets, switch over to Performance mode. Then go to Video Output and make sure ALLM or Auto Low Latency mode is enabled. Set variable refresh rate to automatic and confirm that the 120Hz option is turned on. Higher frame rates and refresh. देखो मैं अपने वाले का सिस्टम क्या कर रहा है. सेटिंग. अबे इसमें आएगी भाई accessibility में नहीं, advanced feature में भी नहीं. इसकी सेटिंग का बोलना किधर है भाई. जा सेटिंग्स, ये तो सेम ही है. ऑल सेटिंग्स. जर्नल में क्या है. पिक्चर एक्सपर्ट सेटिंग्स. गेम सेटिंग कहाँ है मेरी. ये है गेम. अबे उसको लगाना पड़ेगा. लाइव चल रहा. अभी देखना आएगा एक बार. आ जा बेटा लाइव आ जा. लाइव आ जा. क्या बात है. मेरे को लगता है इसको लगाना. क्या बात है. बाल देख रहे हो लड़के के. कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है. इतना तो चलना चाहिए. अरे क्या ही बातें हैं. जो किस्मत में आनी होती है तो चीज टॉप की आती है. है ना बात. अभी PS1 नहीं देखा कभी. PS2 देखा था. PS1 देखा था किसी के घर में. PS2 नहीं देखा. PS3 देखा था किसी के घर में. PS4 देखा था किसी दुकान में. PS4 Pro ये लेके घूम रहे थे टटपुंजिए लचपुंजिए. PS5 आया सीधा घर में. स्लिम बात कर रहे हो. हमने मेहनत की कमाई से. And for a lot of people who like consoles and sometimes collect and such, a
damaged box is something that needs to be repaired. Here we have the version that is CFI 2014, which is this version that comes with both games, right? Everyone with this number will have these two games. There are others that come with Spider-Man, other titles, including God of War, I believe. And that's it. Here's the image. Let's open it and see what it looks like. See what it is look like. The box is actually funny. It doesn't open completely. Look, it's kind of stuck. These games stuck here are the ones. Oh, क्या बात है. One of the things I really wanted on the PS5 was to have मेरे physical. को सीडी में लिए यार. And I'm even going to correct something I said about the PS5 Pro, that it doesn't have physical media. But I heard, from what they said, I haven't confirmed this information yet, but it seems like the slim disk drive will be able to be plugged into the PS5 Pro, which is Right interesting, करना है यार. and they sell it separately, right? खुलेगा भाई. Let's see if there's a way to get these games out here without destroying this box here. Guys, if you don't want to destroy the box to take it out, just unfold it here and the game will और come क्या out. कह रहा हूँ मैं, को दिमाग ही नहीं है अंग्रेजों It's में. actually छू दिया साले. The Last of Us Part 2. PS5 games price today. Generation also PlayStation best price. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. Finally, God of War. PS5 GTA 5 gameplay. ला देखते हैं अभी कैसी है. फिर ले आएंगे ना. गोलियां पड़ गई, भाग ले. गोलियां लग गई. अबे भाग नहीं गोलियां. अबे यार वो लेके उड़ गया वो तो. चलना है.
तरफ है निशान चलो आगे चल चला अबे बंद करना यार लेट गया लेट ही गया इसके साथ बैठ गया दोबारा ये ट्यूटोरियल बढ़िया यही बात है लगा दे जंप बड़ी घड़ी है भाई क्या ही गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर बस लाइट गिर गई क्या भागती गाड़ी है Beautiful. हेलो क्या हालचाल है कमेंट करो ना यार क्या देख रहे हो अरे भाई उसने खाना निकाल ली उसने अरे कराने मोबाइल कराए मोबाइल Just for wishing you. When it comes to supplements, absorption is key. Regular supplements break down in stomach acid, losing effectiveness. Our capsules have an inherent coating that protects them from stomach acid, so they reach your small intestine where Beautiful है चलो मैं well-being nutrition साढ़े छः हो supplements designed for better absorption. Try everything for that.
for what actually works, introducing NVIDIA Luminous Even Glow Day Cream SPF 50 और 300 के साथ जो है विटामिन सी से 60 गुना ज्यादा असरदार starts working from day one. Get ready for even glowing skin with Luminous Even Glow Day Cream. वही है, थोड़ा थोड़ा इनहेंस करते जा रहे हैं। Fidelity mode, आय क्या बात है, इसमें वो कम है बहुत है, पता नहीं इतना नहीं चाहिए दिखा दो 1080p 30 fps ray tracing no VRR no fidelity mode dynamic 40 25 20 fps अच्छा 4K और ऊपर चलता 30 पे और RT में 60 fps 2K में अबे बंदी हो गई गेम। हेलो क्या हाल चाल है भाई? अरे यार कमेंट तो करो ना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। क्या देख रहे हो? मैं तो गेम देख रहा हूँ अपनी PS5 की। सोच रहा हूँ कौन सी लूँ यार, कमेंट करो ना कौन सी लूँ। अभी मैं PS5 का ना कैमरा लेने जा रहा हूँ यार, 5000 का कैमरा यार। अभी मेरे लिए सिर दर्दी खड़ी हो गई है, ऐसे लाइव होना पड़ रहा है मेरे को। उसमें कैमरा नहीं है, पहले बता दो तो ले लेते। ये मोटी तू तो नहीं है ना? पक्की बात बता दे। PC4 क्या? अरे भाई साहब ये तो गजब है यार। PC का मुकाबला कहाँ क्या करेगा? PC का मुकाबला इसमें अटक रही है पर हाँ कौन है देगा नहीं। PS5 का PS5 Pro से मुकाबला देखते हैं। अरे क्या बात है, Pro तो नेक्स्ट लेवल पे चला। गजब है भाई, गजब है, गजब है गजब। अरे सर ठंडा होने लग गया। सर ठंडा होने लग गया है। 4K अल्ट्रा HD कंपैरिजन ही करते हैं तो यार। ओ भाई साहब क्या बात है। कुछ फोटोज में बढ़िया, कुछ फोटोज में बढ़िया। अरे ये तो मार दिया था मैंने इसको। ढलते सूरज के आगे शतरमुख पे बैठे अपने पंख फैलाए आएंगे आपके सपनों के राजकुमार। इतनी ग्रैंड एंट्री क्या बात है, क्या बात है। 1 घंटा तो लाइव करेगा मैं, लाइव 1 घंटा तो लाइव करेगा मैं।
ये क्या था बे? ये था क्या? मेरे को समझ नहीं आ रही। मैक्स आउट GTA 5 चीज क्या ये? मैक्स आउट GTA 5 इधर ले जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो गई होगा। मेरे को ना सर की ठंडक जाती है पीछे से। मुंडी को खाना खिलाने जाना है मेरे को। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैक्स आउट। भाई साहब, क्या बात है भाई, क्या बात है। इतनी जल्दी जलती है, समझ बन नहीं पा रखा। ये मेरे को लग रहा है 20 to 25 FPS भी जल्दी गया। अच्छा ऐड आती है ना, इसलिए बोल देता हूँ, चलिए होता है जो भी है। पैसा लेके जाए। पूरा मार दिया तुमने, कुत्ता मार दिया। बेकार लग रहा है, कुछ बढ़िया नहीं है। ये क्या है? So you've probably seen a lot of PS5 Pro videos, but today we're gonna do something different. We're not gonna just sit here and talk about numbers and specifics. We're gonna talk about the feels. Does it actually feel like an upgrade to own a PS5 Pro if you've already got one? And we're gonna try a bunch of different scenarios. We're gonna do some side by sides, the old versus the new. We're also gonna try on a bunch of different TV sizes. So if this is a major upgrade, will it even benefit you based on your TV size? Let's get into it. All right, so first we're gonna start off with some games that are optimized for the PS5 Pro. We're gonna start off with Dragon's Dogma 2. All right, so we've got our game open. These are two 65-inch OLED TVs. Now, the color might be slightly different between the two of these. That's not what we're looking for. We're looking for detail and frame rates. And real quick, when you jump into the settings, you'll notice on the regular PS5 over here, we've only got 4 options. But on the PS5 Pro, we've got this 5th option, and that's PlayStation Spectral Super Resolution, which is basically what uses AI to enhance the image quality. All right, so we've got our character over here, and just a quick eyeball test. I'm definitely seeing more detail over here. I'm looking at this lantern that he's got, the stitching on his clothing, and even like the facial hair texture. Whereas with this, the stitching on his clothing looks a lot softer, the lamp looks softer, and you're seeing less detail on like the facial hair. But when you just take a look at like the background, I'm not seeing anything noticeable, especially if I were in gameplay. All right, let's go up to this griffin. Okay, yeah, there's more detail over here for sure. That's
That's not to say there isn't any detail on this guy. It's just, this is sharper. This is definitely sharper. And check this out. Look at the detail on that compared to the individual leaves of the trees on this. So from what I'm seeing right now, it's like the finer details. All right, now it's that up close and personal, but there. इधर आ जाओ. All right, so if I'm over here, playing, I'm looking around, looking at the character, looking at the griffin, I'm doing the same thing over here. I think this is a normal distance to be away from your TV, and I'm seeing a lot of detail on his clothing with PS5 Pro compared to the standard PS5. So that also feels smooth.